So welcome back in our YT series in which we are decoding previous year questions polity for prelims from the year 1979 to 2024. In part 1 we took DPSP as a topic and we solved from 2024 to 2017. This is DPSP or Directive Principles of State Policy part 2 in which we'll be solving from 2017 to 1979. So let's start. Let's see the first question. The first question, it was asked in 2015. The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in. देखो बार बार वही टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है. इट इज वेरी सिंपल. हमने पार्ट 1 में किया था डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. फाइन, वेरी सिंपल, नो नीड टू go into details, but you should know that articles of the ideal of welfare state is given in article 38. Fine. Ab I told you article 37, 38, 39 and the new articles which was added by 42nd Constitutional Amendment Act as well as 44th Constitutional Amendment Act and last one 86th Constitutional Amendment Act. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इतना कर लिया you can easily solve more than 95% of DPSP questions in UPSC. Answer here is B, Directive Principles of State Policy. The ideal of welfare state in Indian Constitution is enshrined in its part 4. It is part 4 of the Indian Constitution, that is Directive Principles of State Policy. Question number 2. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in. Now this question was asked in 2014. Fine. तो अगर हम प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो ये डीपीएसपी में है. फाइन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कौन करेगा? स्टेट करेगा, राइट. तो इट इज इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. नाउ बिकॉज 9th शेड्यूल डील्स विद लैंड रिफॉर्म्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, it talks about individuals duty to uphold unity and integrity of India and preamble. Fine, the answer is directive principles of state policy. अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्टिकल mentions about promotion of international peace and security. ठीक है, तो यूपीएससी कैन आस्क इन अपकमिंग प्रीलिम्स कि कौन सा आर्टिकल और विच आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस. फाइन, तो इट इज आर्टिकल 51. ठीक है, टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. आंसर हियर इज बी. देख रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चंस है. इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4. सॉरी फॉर द टाइपो एरर. पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डीपीएसपी. Question number 3. According to Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of country? Now this question was asked in 2013. Fine. And if I talk about 2013, अगर मैं देखूं अभी भी ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है. The answer is very simple, है ना. Fundamental for the governance because it is kind of a guideline for state, fine, to make schemes based on directive principles. Fine. And it is fundamental for the governance of country. Now the answer here is simple, directive principle of state policy, but a note for you or a pro mentor tip for you or pro faculty tip for you that in future UPSC can ask about which article of the Indian Constitution talks about fundamental for the governance, which article is fundamental for the governance of country, and ऐसे करके it can provide you some kind of statement. So here article 37 talks about this line, that article 37 says that DPSPs are fundamental for the governance of country. ठीक है, तो you should remember, है ना. हमने अभी देखा था आर्टिकल 37 इंपॉर्टेंट है, 38, 39, 42nd amendments and 44 amendments के, and like article 51 भी है. The answer here is C, which talks about article 37, which says that directive principles are not enforceable obviously and are fundamental in the governance of country, है ना. ये लाइन फिर से पूछ सकता है, ठीक है, in some or the other form. Let's go to next question. Question number 4. Economic justice, the objective of Indian Constitution has been one of the Indian, sorry, I think it has been typo error. Economic justice as the objective of Indian Constitution has been provided in. ठीक है, objective of Indian Constitution has been provided in. There are 4 options. Now economic justice, if we talk about preamble, it is one of the objective of preamble, है ना. When we talk about objectives given in preamble, it has some objective like equality, fraternity, liberty, fine, along with justice. Justice कैसा? Social justice, economic justice, social and economic justice. Got it? तो preamble में तो है for sure. तो जहां जहां preamble आ रहा है वो तो आपका आंसर होगा. Got it?
तो नन तो नहीं होगा, और फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी नहीं होगा, राइट। नन हो सकता है, पॉसिबल हो, सी इज नॉट द आंसर नाउ। Fine. Now preamble and fundamental rights, preamble and DPSP. Fundamental rights talks about political democracy, but when we talk about economic democracy and social democracy, it is catered by DPSP. ठीक है, तो ये तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, इट इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दिस कैन नॉट बी आंसर, राइट। तो अपने आप ये बचा प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक and political democracy, sorry, economic and social democracy. Fine. Which article? Article 38, Article 39, Article 41 talks about right to livelihood, equal pay for equal work, ठीक है, and all of that. Fine. DPSP, I'm repeating again, Article 38, Article 39, equal pay for equal work. Article 38 talks about minimizing inequalities in income status facilities. Fine. And Article 41 talks about right to livelihood. These are all tools of economic justice. Got it? Then Article 46 to promote the economic interests of weaker sections. ठीक है, so it is DPSP. Answer here is B. Very easy question. Now come to question number 5, which was asked in 2012. Consider the following provisions under Directive Principles of State Policy enshrined in the Constitution of India. Fine. अब 4 चीज पूछिए, सिक्योरिंग फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, promoting cottage industries in rural areas, securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities. Fine. Which of the above are the Gandhian principles that are reflected in directive principles? When we started directive principles in part 1 video, we discussed some facts about directive principles, in which we saw that directive principles can be divided into 3 types of principles. First is Gandhian, second is liberal intellectual, third is socialist. So here UPSC in 2012 talking about Gandhian principles. Gandhian principles कौन कौन से हैं? तो you can go or apply logic that what can be Gandhian teachings. If you know the Gandhian teachings, then it would be very easy for you to reach to an answer. Gandhi ji always talked about village as republics. Here organizing village panchayat is there, which is Article 40, है ना, and it became basis for panchayati raj institutions. तो organizing village panchayat तो Gandhian principle है for sure. 2 is your answer for sure, right? 2 इसमें नहीं है, C option में 1, 3 and 4 था, तो it cannot be your answer. Fine. Now securing for citizens of India a uniform civil code. What is uniform civil code? It is in Article 44. It talks about uniform civil laws in marriage, divorce, adoption and inheritance for all, है ना, for all citizens of India. ठीक है, तो it is about liberal intellectual principle. It is not a Gandhian principle. Fine. तो 1 cannot be your in option. तो 1 हट गया. Fine. तो अपने आप your 2 and 3 आ गया. 2 we saw village पंचायत. Third, promoting cottage industries in rural areas. अपने आप सही हो गया. But it securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities is a socialist principles. Fine. Answer here is B. ठीक है. So here are some Gandhian principles to organize village panchayats, which is Article 40, है ना, it became basis for panchayati raj institutions. To promote cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas. Now take pro mentor tip or pro faculty tip from us that cottage industry पूछा है, you know cooperative movement is getting started, Ministry of Cooperation बन चुका है ना, cooperatives to form cooperatives, ये भी आपका एक fundamental right है, ठीक है, तो government is pushing lot of its resources on making or forming cooperatives, ठीक है, it is kind of promoting cooperation as a trait between members for economic growth, है ना, तो you can expect more questions on these. So just remember it is coming from or cooperation basis in rural areas coming from Article 43. Fine. Then Gandhian ideology और क्या क्या है? To promote the educational and economic interest of SC, STs and other weaker sections. ठीक है, Article 46. To prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. Article 47. And to prohibit the cow slaughter, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds. Fine. Article 48. ठीक है, these are some of the Gandhian principles.
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन? तो अब बियरिंग ऑन एजुकेशन बोला, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब भी हम ये सब देखते हैं तो इट कैन बी, इट इज वेरी ब्रॉड एक्चुअली, राइट? तो ऑलवेज गो विद द ब्रॉड थिंग, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यू नो, है ना, आर्टिकल 45 में देयर इज अ प्रोविजन ऑन एजुकेशन, फाइन। देन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत हैं, ठीक है, कहाँ 11th शेड्यूल 12th शेड्यूल में, एंड म्युनिसिपैलिटीज ऑल्सो, राइट, म्युनिसिपैलिटीज 12th शेड्यूल, पंचायती राज 11th शेड्यूल। नाउ दिस कैन हैव फंक्शंस, फंक्शनल आइटम्स में एजुकेशन, कि उनको एजुकेशन में कानून बना सकते हैं वो लोकली। देन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, फाइन, एंड 6th शेड्यूल टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन 4 स्टेट्स, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, तो वहां हो सकता है, राइट, दे कैन मेक लॉज ऑन एजुकेशन, इट इज पॉसिबल, ठीक है। देन 7th शेड्यूल टॉक्स अबाउट यू नो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, पर एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये तो होगा ही फॉर श्योर, ठीक है, ये भी होगा फॉर श्योर, ये है, ठीक है। तो आंसर हियर ऑटोमेटिकली बिकम्स 1 2 3 4 5, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां ब्रॉड लिंकेजेस हो, ठीक है, इनडायरेक्ट लिंकेज भी होगा तो गो फॉर इट, ठीक है। तो आंसर हियर इज डी, 1 2 3 4 5, फाइन, आंसर हियर इज डी, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Now question number 7, the instrument of instructions contained in Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950, as this question was asked in 2010, ठीक है। तो you, as we know, when we started DPSP, we checked on some facts that DPSP or directive principles are essential for the governance of country. DPSP are kind of guidelines given to state. These are kind of instruments given to state to make policies and schemes, राइट। तो वही पूछा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था, हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज इन विच वे? तो इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2010, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक इट्स विजिबल, I can read it for you. With reference to the Constitution of India, consider the following: fundamental rights, fundamental duties, DPSP. Which of the above provisions of the Constitution of India is/are fulfilled by National Social Assistance Program launched by the Government of India? अब National Social Assistance Program, अगर आज भी अगर मुझे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, तो इट मे हैपन दैट आई मे नॉट नो कि वो क्या, किस, what is this National Social Assistance Program, but this exam is general studies, you can go with the logic. National Social Assistance किसको करेगा, ठीक है, सोशली कर रहा है, ठीक है, मे बी इट इज टारगेटिंग मोर ऑफ अ लॉजिक, इफ यू अप्लाई लॉजिक, ठीक है, इट हैज मोर चांसेस दैट इट इज गोइंग फॉर वल्नरेबल सेक्शंस और वीकर सेक्शंस, फाइन। सो एज यू नो दैट अगर मैं लॉजिकली भी जाऊं तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, इट इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, एंड बेसिकली किसके लिए लॉन्च किया गया होगा? या तो वल्नरेबल सेक्शंस और वीकर सेक्शंस, उन्हीं के लिए, ठीक है। तो मतलब स्टेट इज फुलफिलिंग इट्स ड्यूटी बाय लॉन्चिंग सम स्कीम, फाइन, मतलब इट इज फुलफिलिंग इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। वी सॉ, राइट, टू गो फॉर वेलफेयर स्टेट एंड इंश्योर जस्टिस, इट शैल स्ट्राइव टू मेक सम पॉलिसीज, है ना, वो कैसे कर रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से कर रहा है। तो 3 इज फॉर श्योर, फाइन। नाउ फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं है, राइट, बिकॉज स्टेट कर रहा है, स्टेट इज डूइंग दैट, नॉट एनी इंडिविजुअल, तो 2 इज नॉट देयर, बी एंड सी इज रिमेनिंग, राइट, ठीक है, 3 ओनली एंड 1 and 3 ओनली। नाउ स्टेट इज डूइंग दैट, फाइन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, तो क्या फुलफिल हो रहा है? डीपीएसपी, नॉट योर राइट, ठीक है, बिकॉज इट इज असिस्टिंग हियर। द आंसर हियर इज बी ओनली, विच इज 3 ओनली, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following articles of the DPSP deals with promotion of international peace and security? It is asked in 2002 and it is a kind of repeated question because हम तो उल्टा जा रहे हैं, right, we are going backwards। अभी हम देख रहे हैं, हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है कि which article deals with promotion of international peace and security, the answer here automatically becomes article 51, ठीक है, हमने किया हुआ ये क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, answer here is A, article 51. Last question, the purpose of inclusion of directive principles of state policy
in the Indian Constitution is to establish. This question was asked in 2002. है ना? As we know, fundamental right को objective क्या है? What is the aim or objective of fundamental right? To achieve political democracy. But what is the aim of DPSP? It is to achieve economic and social democracy. That's why DPSP talks about your livelihood, talks about minimizing inequalities, talks about equal pay for equal work for both men and women. ठीक है, तो आंसर ऑटोमेटिकली becomes social and economic democracy. Political democracy, it is fundamental right. ठीक है, social, only social no, Gandhian no. ठीक है, Gandhian is just a part. Social and economic democracy. Answer is D. With this, we have completed DPSP. There are some questions left which will be completed in the further videos. I hope you are liking our series. So stay tuned for further videos. Thank you.